बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक गो थ्रू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। और जिस तरीके से अभी तक आपने में जितने भी ट्यूटोरियल्स गो थ्रू किए हैं, हमने कोशिश करी है कि हमेशा हम कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें आप सब लोगों के साथ। सो आज हम विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS बहुत अच्छी सी एक एनिमेटेड सर्च बार क्रिएट करने जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर गई सबसे पहली चीज़ जो है, हमने यहाँ पर CSS का और फ़ॉन्ट की जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया, जो कि मैंने बहुत दफ़ा अपने ट्यूटोरियल में पहले भी आप लोगों को गाइड किया है। तो सिंपल हम डायरेक्टली बॉडी पर आते हैं। दैन वी आर गोइंग टू क्रिएट सम फॉर्म्स हेयर फॉर आर क्रिएटिंग सर्च बार एनिमेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फॉर्म पर आते हैं और अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर हमने फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड द लेबल। सो हियर इज़ द लेबल 4। सो यहाँ पर लेबल 4 में हम सर्च ऐड करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस। इसी के साथ हम यहाँ पर सर्च ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। एंड देन यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द इनपुट। सो यहाँ पर हम इनपुट लेंगे एंड देन आईडी को हम सर्च रख देंगे। इसी के साथ टाइप भी हमारी सर्च हो जाएगी। So after that we are going to add here some patterns. So जो patterns आप indicate करना चाहेंगे, then we are going to provide here a dot steric and then we are going to // so here is the / and then s and then dot, and again we are going to provide here steric. Okay, after that required, this means that you should need to write here some data, अदरवाइज इज़ वर्किंग। उसके बाद रिक्वायर का टैग देते ही आप इसलिए एट्रीब्यूट है कि आप वो चीज़ मैंडेटरी कर दें अपने यूज़र के लिए कि वो लाजमी उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ पुट करे डाटा अपना, दैन फर्दर मोर वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज इट्स नॉट वर्किंग। सो यहाँ पर क्लास पर आते हैं एंड देन कैरेट। ओके, क्लोज कर देंगे फॉर्म को, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। दैन वी आर स्विच ऑन द CSS। तो CSS के लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेटिंग करते हैं अपने मैन टैग्स की। सो यहाँ पे स्ट्राइक लगाते हैं एंड देन सबसे पहले बॉर्डर बॉक्स। सो गाइज यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट आर द बेसिक स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉर्डर्स ओपन कर लेते हैं। सो हियर इज़ द बॉर्डर, टेक हियर 0। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉक्स साइजिंग। Here is the border box. After that implement here the margin. So the margin is 0 and then padding as well as हम यहाँ पर padding को भी 0 रखते हैं। Then we are going to switch on the, अच्छा यहाँ पर अगर हम चाहें तो प्रीव्यू भी ओपन कर सकें ताकि हम देखते रहें कि हमारी एनिमेशन जो क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर की फ्रेम्स एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे। सो ये भी आप कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी द प्रीव्यू एज वेल, तो यहाँ पर आप उसको ओपन कर लें। इट्स क्वाइट कन्वीनियंट कि फाइनल रिजल्ट आपको यहीं से ही दिखता रहेगा। तो यहाँ पर गाइस मैं कुछ रूट में कुछ कलर्स होल्ड कराऊंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले BG नेम होल्ड कर देती हूँ, जो कि मैं कलर कोड यहाँ पर दे देती हूँ। सो आप कोई सा भी कलर के हिसाब से जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं, दैन यू कैन ईजिली एंड इट्स क्वाइट कन्वीनियंट फॉर यू इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट। इसी के साथ मैं फोरग्राउंड कलर दे देती हूँ। सो फोरग्राउंड कलर के अंदर अगैन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द कलर। So now close this. After that here is the input.
here is white, primary, सो प्राइमरी में हमने ये ड्यूरेशन हम इसका भी एक पास कर देते हैं ताकि हम कहीं पर भी कॉल करना हो जस्ट DURs के ज़रिए हम उस पूरे प्रोसीजर को कॉल कर लें। फॉन्ट साइजिंग मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देती हूँ। सो हियर इज 16px plus 24 minus 16 multiply 100 view 320px then divided by 1280 minus 320. Now we are going to switch. तो यहाँ पर अब कुछ और बेसिक क्राइटेरियाज इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो हियर इज़ द बॉडी, इसी के साथ हमने इनपुट दिया था। देन यहाँ पर अब कलर हमने ऊपर दे दिए हैं, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि सिंपल आप वेरिएबल कॉल करें और जो भी आपने फोरग्राउंड कलर का एक कलर डिज़ाइन किया था दैन यू कैन ईजिली कॉल इट हेयर। सो यहाँ पर फॉन्ट 1 EM divided by 1.5 hand. So now we are going to working on body criteria. So अब हम आते हैं बॉडी पर and then we are going to start here again working. So here is the background, क्योंकि हमने background का already variable create किया हुआ है तो हम background पर आते हैं and then variable. So यहाँ से हम BG को call कर देते हैं, ठीक है। तो now you can see the automatically background is added. So display पर आते हैं and display को हम flex कर देते हैं। After that we are going to implement here the height. Here is the 100 VH. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ अब हम आते हैं फॉर्म पे। आफ्टर दैट फॉर्म के बाद हम आते हैं इनपुट पे एंड देन कैरेट की हमने क्लास क्रिएट की है, हम उस पर आ जाते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट हियर द मार्जिन। And then implement here the form. So the position is relative. So width is 100%. So now yeah guys, अब हम यहाँ पर implement करते हैं maximum width. So मैं यहाँ पर maximum width hold करा देती हूँ और मैक्सिमम विड्थ को हम रख देते हैं 17 EM। इसी के साथ नेक्स्ट क्लासेस को ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास इज इनपुट एंड देन कैरेट की क्लास ले लेते हैं। सो अगैन इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर, इन दोनों के अंदर हम सेटिंग्स इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हियर इज़ अ डिस्प्ले को ब्लॉक कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द ट्रांजिशन। हियर इज ऑल कैलकुलेट को वेरिएबल्स के साथ कर लेते हैं। आउटसाइड दिस we are going to take here the duration 0.5 and out from the box here is the linear. Okay, move on the next.
So here is the next class is input, and after that the background transparent. Here is the border radius 50%. Implement here the box shadow. Inset. So after that implement the carrot color. Implement here the carrot color for the variable. हमने primary color बनाया था. Here is the primary. Okay, move on the next. So width रख देते हैं 2 em. After that implement here the height as well, 2 em. So here is the WebKit appearance. WebKit appearance को none कर देते हैं. After that implement here the mouse appearance as well as none, and after that appearance is also as none. So move on the next. So here is the input focus. Here is call here another input valid. So here is the background. Variable input. So after that we are going to implement here the border radius. यहाँ पर हम border radius जो है वो simple 0.25 em प्रोवाइड कर देते हैं. इसी के साथ साथ implement here the box shadow. None कर देते हैं property को. After that implement here the padding 0.75 em and that 1 em. After that transition duration variable duration 0.25. Same like that we are going to implement here the transition delay. Calculate multiply. Sorry, okay, fine, it's not going to be a result. So multiply here and again 0.25. Move on the next property. Here is the width, it's gonna be 100%, and after that we are also implement the height as 3 em. Move on the next property is the input focus. So here is animation. We're going to provide here the animation to show. Here is we are going to give the animation name, variable duration
एंड देन इसी के साथ स्पेस प्रोवाइड करके वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द स्टेप्स 1. After that implement here the outline. It's transparent. Move on the next. Input, focus, carrot. Input, valid, carrot. Here is implement here the animation. Handle to carrot. Variable, duration, and after that we are going to implement here the linear. Here is the background. Here is the transparent. .5 em. Translate. .1 em. Move on the rotate -180 degree. Here is translate. Implement here the 7.5 em, and after that we are going to implement -0.25 em. So move on the next. Here is the input. WebKit search. So we are going to implement here the search decoration. And then we are going to implement here WebKit appearance. Here is the none. Move on the next. Here is the we are going to implement here the label. So कलर इम्प्लीमेंट करेंगे फ़ॉन्ट का, जिसमें हम इम्प्लीमेंट अपना जो है वो कलर कॉम्बो करेंगे. Here is the color. Move on the overflow, hidden. After that position is absolute, and then implement here the width gonna be 0, and then after that implement here height is gonna be 0. Okay, move on the next. ये हम एनिमेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सर्च बार के अंदर, तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन इफेक्टिव रिजल्ट. ओके, मूव ऑन दी बैकग्राउंड. So background is the current color. So implement here the border radius. .125 em. 0.125 em. Move on the next. Here is the margin bottom.
0.6 em, and after that implement here the width 0.25 em. Move on, the next is the height is 1 em. After that implement here the transform. Here is the translate 0 minus 1 em. So here is the rotate minus 45 degree. Here is the translate 0.875 em. So move on the next. Here is the transform origin, आप देख सकते हैं. So here is the transform origin. Here is the 50% and then 0. Okay, now it looks like fine. So अब हम चलते हैं डार्क मोड की साइड पे इसकी. तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल कमेंट पास कर देती हूँ फॉर द डार्क मोड. So we are going to provide some media queries and then we are going to see the result. So here is the media query. So screen की जगह पे we are going to implement here prefers color scheme dark. ठीक है जी. Now here is root. So again we are going to call the colors. BG में हम color combination change कर देते हैं. 1 starry 17181C. Move on the next. Here is again FG. Here is E3, E4 and E8. Here is the color combo related to the black theme like that. तो उसके हिसाब से जब आपकी theme white होगी, it's gonna be change the color combo. So same like that we are going to implement here. So here is input. We are also provide another color. So here is the primary. F6. So here are the all color combinations. तो इसी के साथ अब हम आते हैं animations पे. तो यहाँ पर again we are going to implement the animation tags. So they are the quite useful for you. So move on the next. Implement here some keyframes. Show caret from. Here is the caret color for the transparent. So move on the two. Caret color variable gonna be primary. So move on the next. It look like that now, you can see. Okay, move on the next. So after 2 we are going to implement here the 25%. So sorry, we are going to implement
here another keyframes like that. I think that कि मैंने apply कर दिया but वो नहीं हुआ. So again we are going to enter the keyframes. Furthermore, so here is the handle. I just give the name handle to caret for animation class. Move on the next from here is a background for the current color. Here is the width. Here is the height. Move on the next. Here is a transform. Translate 0 -1 em. So same like that, implement here the rotate. We are going to take here -45 degree and then translate 0 and then 0.875 em. So after that we are going to implement here the 25. So here is the background. Here is the current color. Here is the width. Height. Transform. Translate 0 -1 em. So here is the rotate -45 degree. So okay, मैं ओके ठीक है वही रखते हैं सेम, या बल्कि काम करते हैं रोटेशन थोड़ी सी इसकी चेंज करते हैं. हमने ऊपर टॉप पे रोटेट 45 डिग्री दिया है. आई थिंक वी आर गोइंग टू टेक केयर द 180 डिग्री. इट्स गोना बी ठीक है. And then after that we are going to implement here the translate. Here is 0 0.875 em. Here after that comma 62.5%. Now move on the next. Here is the background. Variable. Implement here the width 1 px. Here is the height 1.5 em. Move on the transform. Translate 0 -1 em. Then rotate. So again we are going to implement here again the -180 degree, and after that implement here again translate. So one by one keyframes के अंदर we are going to provide here some parameters like that, और उसी के हिसाब से आप अपनी एनिमेशन को आप मूव करवा सकते हैं 2.5 em. So after that we are going to out from this. Now here again we are going to implement 75%,
कॉमा लगा देते हैं एंड देन 99%. So now we are going to implement here the background color. So here is the background. We are going to implement here the variable again. So guys, we are going to give here the primary, as well as we are going to implement again the width. So here is the width. Width हम रख देते हैं 1px, and after that implement here the height as well 1.5 em. Again transform implement करेंगे क्योंकि वेरिएबल्स हमें बार बार एनिमेशन चेंज करनी है. तो here is 0 -1 em. So after that again rotate. Here is the rotate is -180 degree, and after that implement here the translate. So translate पे again 7.5 em implement कर देते हैं हम. Okay, so here is 7.5 em, and after that you can implement here again -0.25 em. Okay, move on the next. So same like that. इसी के साथ अब मैं आती हूँ 87. इसी के साथ we are going to come back here 87.5%. So यहाँ पर again background implement कर देते हैं. Here is again the primary. So variable, and then we are going to get here the primary. Move on the next. So implement here the width 1px. After that implement here the height again. Here is 1.5 em, and after that implement again transform. Here is transform, translate, then 0, comma, -1 em, then rotate -180 degree, then translate 7.5 em, comma 0.125 em. So again we are going to implement here the 2. So implement here the background. We are going to take here the transparent. After that we are going to implement here the width. It's gonna be 1px. After that height 1.5 em. So after that we are going to again implement here the transform on the different angles. तो हमने यहाँ पर guys हर एंगल से एनिमेशन प्रोवाइड कर दिए. So अब हम बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे विद द डार्क थीम. So let's see what are the result, और देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से काम करता है. So again implement here the rotate -180 degree. Sorry, इसी के साथ साथ again translate implement कर देते हैं 7.5 em, comma इसी के साथ -0.25 em. ओके गाइस, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया है. दैन वी आर गोइंग टू सी द फाइनल रिजल्ट.
So now guys, here is the final result. Simple. इस पे click करेंगे and then you can see the animation. Here is the animation and then you can click it here again. ये back हो जाएगा. Then again आप इसको active और deactive कर सकते हैं. So this is the very interesting and amazing method if you want to apply animation search bar. So I hope guys lecture clear हो गया होगा. लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. if you require the source code then you can also inform me in the comment box. So मिलते हैं another informative exciting tutorial के साथ. जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.